Hey guys, welcome back to my channel. I'm Ankita and I'm back with another video. And in this video, I'm gonna show you a DIY mirror. Actually, पहले मेरे wall पर कुछ और mirror रहता था, but मैंने आज वो पूरा निकाल दिया. If you see, I'm gonna show you. Wait. So वहाँ पर एक mirror हुआ करता था and मैंने वो निकाल दिया. तो अभी उसी को मैं बनाऊंगी. तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये मिरर बेस बनाया हुआ है. आई यूज कार्डबोर्ड टू मेक दिस एंड आई ग्लूड सम टिश्यू पेपर्स. सो ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो इसी को हम डेकोरेट करेंगे उस जगह पे. तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सम पॉप स्टिक्स, सम fabric color or acrylic color I'm gonna use, and I'm gonna use just glue, like the wooden glue or the normal glue, whatever, and I'm gonna fix it on the wall as a wall decor. So without further ado, let's get started. So this is the mirror which I'm gonna use, and इसके साथ साथ I'm gonna use this pop sticks, a glue where I can fix many things like plastic, metal, rubber, wood, leather, ceramic, anything. This is a flex bonding. It's a super glue. I'm gonna use this and I'm gonna use this black acrylic color. सबसे पहले मैं अपना ये मिरर पेंट करने वाली हूँ. तो मिरर पेंट करने के लिए मैं कुछ नहीं, बस ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ. लाइक दिस इज़ ऑफ 10 नंबर एंड एक्रेलिक कलर. जैसे कि मैंने बोला है, आई एम गोना पेंट इट ऑल ओवर.
yeah, here it is. I'm gonna paste it here, like stick it here, something like this. So for that I'm gonna use some what do we call it, stickers, which gonna help us to keep it at a place. I'm gonna use that sticker, and even I'm gonna decorate it with these things. I made this. So as you can see, I have already applied these uh, glue drops or stickers, and now I'm gonna stick it here. So